I am Nirmalya Malkhandi from the sales and the business development team of Alpha Niti. With me, Mr. Akshay Bajate is there. He is the head of investment and the principal officer. He is having more than 15 years of experience in the capital markets, had extensively worked in eminent companies like Nomura, JP Morgan, and Kotak Securities. So with me along Mr. Prashant Bhingardev, who is the head of sales and the business department, is here. My colleague, Ms. Shreya Das, she is heading the customer success and the management department. So with this, I pass on the torch to Mr. Prashant. Okay. So I'll allow me to, I can pass on the torch to Ms. Shreya Das to introduce, to say a few lines about on our company, on the platform that we are discussing out here. After that, Akshay Bajate can take the torch ahead. All right. Thank you. Thanks, Nirmalya. Very good evening to everyone. So my name is Shreya. I take care of customer success at Alpha Niti. And I'll just walk you through what our platform is all about and our team. So I hope my screen is visible to all of you. Yeah, Shreya. Yeah, just a second. Right. So as you can see, Alpha Niti is a platform which is 100% digital. We have multi-asset class, data-driven, rule-based, and tech-enabled platform, which has access to both the biggest markets in the world, India and US, with wide range of product offerings, right from our Alpha Matters, which are basically thematic baskets, and Alpha Genie, our single stock recommendation engine. Talking about Shreya, you're not audible. Bala sir, can you hear her, or is it a problem from our end? I can hear you. Yeah. So I think there is some network issue. Shreya, are we audible to you? Can you hear me now? Yeah, that's much better. Shreya, it would be great if you can have a mixed language discussion of Hindi and English, because there are few attendees who are asking for a Hindi language as well. तो हम लोग एक mixed language में ही हम लोग इसको आगे बढ़ा हैं। निर्मला, आपको अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बराबर आ रहा है, आपका आवाज अभी क्लियर आ रहा है. आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के आप बताएंगे तो थोड़ा बेहतर होगा, बिकॉज हमारे कुछ अटेंडीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू गो अहेड विद द हिंदी एज वेल. ठीक है, ओवर टू यू श्रेया. आई थिंक उनके एंड से कुछ तकनीकी डिफिकल्टीज आ रहे हैं, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, जैसे कि श्रेया ने बता रही थी आप लोगों को. सो अल्फा नीति एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, जिसका मल्टी एसेट क्लास, रूल बेस्ड, डेटा ड्रिवन एंड टेक एनेबल्ड सेगमेंट में हम लोग इसको इस इंडियन इन्वेस्टर यानी कि इस देश का निवेशक को हम लोग लेके आते हैं, बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन यूएस मार्केट के ऊपर. हमारे पास काफी सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. हम लोग मल्टी एसेट क्लास अपने आप को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग के पास नॉट ओनली सिर्फ इक्विटी नहीं, बल्कि इक्विटी में सिंगल स्टॉक रिकमेंडेशन है, हम लोग का बास्केट्स आइडियाज है, और म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स भी हम लोग के पास अवेलेबल है. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सो इन द नेक्स्ट slide I'll be taking a few naming few of the key members of our company. So first and foremost, Mr. Arindam Ghosh, the founder and CEO of our company, जो कि
इससे पहले अल्फा नीति कंपनी फाइंड करने से पहले इस इंडस्ट्री में काफी सालों से रह चुके हैं। यही पर्सन है जो जिन्होंने मिराई एसेट मैनेज, आई मीन आज के दिन में सबको आपको पता है कि मिराई एसेट म्यूचुअल फंड का कहाँ तक पहुंच गए हैं। अगर आप लोग इक्विटी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप ऑलरेडी निवेश करते हो, इसलिए तो ही हैड बीन द सीईओ और ऑफ मिराई एसेट मैनेजमेंट इन वाइल, एंड ही ब्रॉट मिराई एसेट टू इंडिया। इन्होंने मिराई एसेट को इंडिया में लेके आए एंड उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किए हैं। आज कुछ 2 मंथ्स बैक मेरा एसेट ने 1 लाख करोड़ का एयूएम भी क्रॉस कर चुके हैं। इसके बारे में भी आप लोग को न्यूज आ चुके होंगे। So prior to that, he had been working as the head of operations from into the entire APAC operations based out in Hong Kong, in Mirai Asset. He had been involved. He had been also in the key leadership roles in companies like Fidelity, Asia Pacific, Tata Mutual Fund एंड आदित्य बिरला ग्रुप। तो ये सारे जो कंपनीज मैंने आपको अभी भी बताए, इसमें भी उन्होंने की लीडरशिप रोल पे ये काम कर चुके हैं। तो सेकंड जेंटलमैन जो है हमारे साथ, हमारे डायरेक्टर मिस्टर युवर भट्ट। आप काफी बार इनको देखे होंगे कि जो टीवीज में आते हैं, सीएनबीसी एंड जो न्यूज चैनल्स होते हैं जो मार्केट रिलेटेड बेस आपको हेल्प करते हैं, आपका जो गाइड करते हैं इनफैक्ट। So he is one of the most highly acclaimed investment managers, having managed foreign institutional investments in Indian market. He was associated earlier with Jardine Fleming as the CIO, which was later taken up by JP Morgan. इन्होंने डाल्टन कैपिटल का इंडिया आर्म का एमडी भी रह चुके हैं। इसके अलावा भी उनका जो आज का दिन में वो कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठते हैं एज इन वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस एंड बैंक्स। थर्ड जेंटलमैन इज मिस्टर एस नंदा। He is himself an avid investor and a young entrepreneur in this industry. He has his career stints in Tata AIG and ICICI Bank. He operates out from London and he is a LSE alumni. The fourth gentleman जो कि हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे ये डिस्कशन में, मिस्टर अक्षय बजाते। ही इज द हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताए थे अक्षय जी के बारे में। अक्षय जी brings along more than 15 years of experience in the Indian capital markets. वो खुद भी एक बहुत ही पैशनेट इन्वेस्टर है एंड साथ में उन्होंने जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नोमुरा, जेपी मॉर्गन एंड कोटक सिक्योरिटीज में उन्होंने ऑलरेडी अपना स्टिंट दिखा चुके हैं। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया हमारी जो अल्फा नीति का टीम है, हमारे जो की मेंबर्स हैं। टोटल अगर आप देखा जाए तो हम लोग का कुछ 7+ डिकेड्स का इंस्टीट्यूशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग के पास एक्सपीरियंस है। तो ये अभी इतना दूरी मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर अक्षय बजाते to take the torch forward and give us an insight on the market and on the platform as well. Thank you, Akshay ji. Over to you. बहुत बहुत शुक्रिया निर्मलिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के ये वेबिनार में। तो ऐसा करेंगे पहले, हेलो सुनाई दे रही आवाज सब? Yeah, it's audible, sir. It's audible, right? Okay. तो पहले ऐसा करेंगे कि प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा डेमो सब दर्शकों को देंगे। उसके बाद एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है मार्केट के ये करंट स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे क्या विचार है उसके ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, और फिर उसके बाद हम Q&A के लिए ओपन अप कर देंगे, जहाँ पे इन्वेस्टर्स और दर्शकों को अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे मार्केट को लेके, कोई सेक्टर्स को लेके, और अगर हो सके तो कोई स्टॉक्स पे भी हम थोड़े बहुत हमारे थॉट्स शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने ये अल्फा नीति का हमारा प्लेटफॉर्म है www.alphaniti.com। यूजर्स जब यहाँ पे आएंगे they will be able to see all kinds of products which we have on the platform। यहाँ पे हर एक इन्वेस्टर के लिए जो उनके लिए उनको जो चीज़ में दिलचस्पी है उस हिसाब से ही हमने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। सिंगल स्टॉक के भी प्रोडक्ट्स हैं
और पोर्टफोलियोज भी है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। आपको केवल आपका मोबाइल नंबर इसमें डालना है। मोबाइल नंबर डाल के आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे बस आपके कुछ ही डिटेल्स आपको फिल करने हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी है, और आपका स्टेट। अगर आपके पास एक्यूमेन की तरफ से कोई भी रेफरल कोड होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के लिए जो भी सब्सक्रिप्शन फीस है आपको उसमें बहुत खास तरह के डिस्काउंट भी मिलेंगे, राइट। दूसरी बात ये रही कि ये प्लेटफॉर्म के लिए जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन फीस भी है। हमारा जो सिंगल स्टॉक का पैकेज है उसके लिए सब्सक्रिप्शन फी 99 रुपीज है। ये इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की है, तो मतलब कि हर महीने नहीं, ये पूरे 6 महीने के लिए आपको केवल 99 रुपीज भरने हैं, और ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। सिमिलरली पूरे 6 महीने के लिए आपको सिर्फ 999 रुपए देने हैं, और ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए खुल जाएगा। इसमें आपको बास्केट्स भी मिलेंगे, मतलब पोर्टफोलियोज भी मिलेंगे, और आपको जो हमारे सिंगल स्टॉक की जो रिकमेंडेशंस है वो भी आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। आइए अब देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म में आप निवेश कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो ये लॉगिन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ओटीपी बेस्ड लॉगिन सिस्टम है, तो आपको आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है। एक ओटीपी जनरेट होगा 4 डिजिट का, बस आपको वो एक एंटर करना है। ഇത് നമ്മുടെ ഡെമോ ആണോ മറ്റേ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയോ എന്തെല്ലാം വായിച്ചു? अब जैसे कि हमने ये ओटीपी डाल दिया है, अब ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए पूरी तरह से खुल चुका है एज अ यूजर, राइट। यहाँ पे ये जो आपको इंडिया भारत का फ्लैग दिख रहा है, ये प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल है निवेश करने के लिए, राइट। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक तो है अल्फा मैटर्स। यहाँ पे तरह तरह के हमने पोर्टफोलियोज बना के रखे हैं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इन्वेस्टर हो जिसको डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज में हाई डिविडेंड यील्ड अगर आपको पसंद है और आपको ऐसे पोर्टफोलियो में पैसे डालने हैं, तो जैसे कि हमारे पास एक डिविडेंड कंपाउंडर्स का भी पोर्टफोलियो है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके इस पे और जानकारी मिलेगी, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 2022 में, जो कि इतना अच्छा साल नहीं रहा है निवेशक के लिए, इस साल में फिर भी इस हमारे पोर्टफोलियो ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, जबकि जो बेंचमार्क है वो फिर भी नेगेटिव है, लगभग 7-7.5%। और इसमें डिविडेंड्स अभी तक हमने इंक्लूड नहीं किया। अगर डिविडेंड्स भी इंक्लूड करते हैं तो शायद ये जो हमारा पॉजिटिव रिटर्न 1.5% का है वो शायद लगभग 2.5 से 3% का हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप पेइंग सब्सक्राइबर हो तो ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपके लिए खुल जाएगा और आपको दिखेगा कि इसमें कौन से स्टॉक्स है। पर इसमें निवेश करने के लिए बहुत ही आसान चीज है। आपको ये पीले कलर के बटन पे क्लिक करना है जो इन्वेस्ट नाउ है, ठीक है। मार्केट आवर्स में आपको यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डालनी है। यहाँ पे ये जो प्राइसेस आपको जो दिख रहे हैं, ये प्राइसेस मार्केट आवर्स में हर 5 मिनट में रिफ्रेश होती जाएगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 20,000 रुपए का अमाउंट डाल दिया, मुझे 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, पोर्टफोलियो अपने आप कैलकुलेट हो चुका है, अब निवेश करने की बारी आती है। तो ये कंफर्म ऑर्डर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर आपको आपका ब्रोकर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप एक्यूमेन कैपिटल के साथ आपका अकाउंट है तो आपको एक्यूमेन कैपिटल पे क्लिक करना है। राइट, तो यहाँ पे आपको आपका यूजर आईडी डालना है।
तो आपका जो अक्यूमेन के साथ आपका जो ट्रेडिंग आईडी और पासवर्ड है जो कि आप यूज करते हैं शेयर्स ट्रेड करने के लिए, आपको बस वही चीज यहाँ पे डालनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो बास्केट है स्टॉक्स का, ये आपके अक्यूमेन के प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, क्वांटिटीज आ चुकी है, और ये जो भी तब का मार्केट रेट होगा उस मार्केट रेट से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको बस ये सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ये 10 के 10 स्टॉक्स एक झटके में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने आपके लिए आसानी से ये पूरा बास्केट तैयार किया हुआ है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए ये एक चीज तो हो गई अपनी। अब दूसरी बात रही, एक मिनट, अभी इसमें से मैं साइन आउट करता हूँ, वापस लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ यूजिंग द सब डोमेन ऑफ acumen डॉट। वापस लॉग इन कर रहे हैं एक बार। ओके तो हमने तो यहाँ देख लिया कि कैसे पोर्टफोलियोज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पे आपको जो भी मटेरियल चाहिए आपको ये प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, है ना। अभी दूसरे जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो मैं क्वेश्चन एंड आंसर में आंसर करूंगा। अभी दूसरी हमारा जो प्रोडक्ट है वो है अल्फा जीनी, जो कि सिंगल स्टॉक्स पे फोकस करता है। अब यहाँ पे एक चीज जो है, हमने यहाँ पे जो आइडियाज हम फॉर्मुलेट करते हैं वो हमारा पूरा मतलब हमने एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है, और वो जो एल्गोरिदम है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो ऑटोमेटिकली स्टॉक में आइडियाज ढूंढता है और यहाँ पे आइडियाज पब्लिश करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 साल से लेके 10 दिन के अंतर तक हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप आइडियाज भी हम देते रहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैं एक निवेशक हूँ, मेरे पास मान लीजिए 50,000 रुपए है 2 महीने के लिए डालने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं ये प्लेटफॉर्म पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक आइडिया दिख जाते हैं कि कौन से आइडियाज में मैं पैसे डाल सकता हूँ। तो सपोज मैंने कोई एक आइडिया पे क्लिक किया, ये चलिए मान के चलिए मैं मिश्रा धातु मिधानी पे क्लिक करता हूँ। अब जब मैं मिधानी के स्टॉक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो टारगेट प्राइस है और एक तो स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको आपके ब्रोकर से भी जब आइडियाज मिलते हैं तो टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस तो आपके पास आ जाता है। तो इसमें नया क्या है? तो नई चीज ये है, एक तो आपको इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। तो मतलब आपको खोने के लिए यहाँ पे सिर्फ आप मान के चलिए 6 रुपए है और पाने के लिए आपके पास 18 रुपए है। अगर मैं 100 रुपए इस चीज में लगाता हूँ तो 6 रुपए खोने के लिए है और 18 रुपए पाने के लिए है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है। दूसरी चीज रही ये स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट मतलब ये चीज है कि हमारे पास 94% तक की हमारी कॉन्फिडेंस लेवल मेजर है कि ये ट्रेड आपके फेवर में जरूर जा सकती है। तो 94% प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेड जो है आपके फेवर में जा सकती है और अगले 2 महीने में ये स्टॉक शायद से ये टारगेट प्राइस तक जा सकता है। और अगर आपको सपोज कंपेयर करना है ये आइडिया, अगर मैं पीछे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि चलो IFCI में भी एक आइडिया है और इसमें तो 32% की अपसाइड है, तो ये तो मिधानी से ज्यादा है, चलिए इसमें देखते हैं क्या चीज है। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रिस्क रिवॉर्ड तो उतना ही है 1:3, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ओनली 64% चांस है कि ये एक्चुअली टारगेट प्राइस तक जा सकती है। तो अगर मेरे पास सपोज 50,000 रुपए है डालने के लिए, तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई चलिए मैं 10,000 रुपए IFCI में लगाता हूँ, 40,000 रुपए मैं मिधानी में लगा देता हूँ। तो इस हिसाब से मैं डिसीजन मेकिंग आपके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म पे काफी आसान कर दी है। तो ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म का डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए अभी एक चीज करते हैं, एक 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए एक छोटा सा Q&A कर लेते हैं प्लेटफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, और फिर हम प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म पे या प्रोडक्ट पे कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कीजिए तो मैं आंसर कर सकूं। ओके अजय सोमनाथ जी, ऑप्शन सेलिंग का प्रोडक्ट जो है वो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है।
लेकिन आप बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी ही हम ये प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, कुछ ही महीनों में। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आपको जो भी इच्छा होगी उसके लिए जो भी टूल्स लगेंगे वो हम सब इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, और आप हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑप्शंस में भी ट्रेड कर पाएंगे। हमारे कुछ स्ट्रैटेजीज पे भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप उन स्ट्रैटेजीज के द्वारा भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, वो लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं किया है, वो टेस्टिंग फेज में है, उसको लगभग 1-2 महीने लग सकते हैं। Right, Mr. Mohan Rao, like I told Ajay Somnath ji, we are still in the process of introducing our options product. Give us a few months. It's currently in the beta testing phase. Once we have perfected it, it will definitely be launched on the platform. And more so, what we will plan to do is, if you are a subscriber who is paying us 999 rupees for the platform, then the options product will come to you within that particular price. You will not have to pay anything extra. Right. Anything, किसी को प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ पूछना है, सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछना है, तो प्लीज पूछिए। Yes, swing trading strategy. So the particular strategy that you see in front of you, where we have giving these trade ideas to our users, you know, for up to 2 months or up to 5 months or 2 years. This is actually based on a principle called as mean reversion. So the mean reversion strategy basically takes into account where we believe that the stocks have finished their corrective phase and are now entering a new bullish phase, and we are trying to catch them on the turn. So that is our version of trying to come out with a swing trading product. However, our focus is more on delivery based longer term buying and nothing to do with futures or derivatives or intraday at the moment. That is currently still in the process. Once it is launched, it will be available to you for the same cost of the platform. Right. This is a good question. So the potential upside. Now, for example, if I click on La Opana, okay, now you can see that this recommendation has been given roughly 2 weeks back. The validity of this trade is up to 2 years, right? There is a reward which is left on the table. So and the reward left and the risk is always calculated not from the recommended price, but always from the current price, right? The way the reward left is calculated is basically on the basis of the target price, right? And the target price and the stop losses are completely automated. It is using our proprietary system that we are able to calculate these stop losses and target prices for you. But the reward left and the risk are always in relation to the current market price versus the target price and the stop loss. It is never with respect to the recommended price. And the reward left and the risk is what ultimately gets you to the risk reward ratio, which is 1:4.5 in this case. So the stock recommendation is based on both technicals and fundamentals. We run a basic fundamental screen to derive a universe, and then we run a lot of quantitative parameters and also a lot of statistical parameters to come up with these trade signals on different stocks. Okay. Okay, if you have 50 clients to register, what discount can we offer? So Prashant or Nirmalya, if you can come in over here and you can talk about if we have any special schemes. Yeah, thank you for this question. So we are already in talks with Acumen and the concerned person regarding the same, where you can avail such an offer. However, we still now we haven't reached a final discount percentage or something like that. So we are in the process of doing it. So maybe by within next 1 or 2 days, you will get to know what is the final price after the discount or whatever the discounted price is all about. Right. Okay. There was one more question. जैसे आपने पूछे थे. So if there is a 50
clients, they have to, if we have 50 clients, all have to register, isn't it? Yes. So if there are 50 or 500 even clients from a particular sub brokers end or something, so everyone needs to have a registration and a subscription done, so in order to have avail any discount that is being offered. So the discount offered will be across all the clientele category. Okay. So now Akshay ji will take you through the current market scenarios and what lies ahead. We are all aware of what is the current turmoil and how the markets are reacting. तो हम लोग को आज के दिन में हम लोग को अक्षय जी ने हम लोग बताएंगे कि कैसे मार्केट बिहेव, आई मीन कैसे मार्केट का बिहेवियर रहे आज के दिन में है और आगे जाकर हम लोग को कैसे निवेश करना है. तो अक्षय जी, ओवर टू यू. राइट, थैंक यू निर्मला. ओके, सो चलिए अभी शुरू करते हैं. जो आज का एक्चुअल में जो सब दर्शकों के लिए इंटरेस्ट की चीज है वो है करंट मार्केट की स्थिति, व्हाट लाइज अहेड इन द मार्केट्स. सो इंटरेस्टिंगली आई थिंक दिस वाज समवेयर इन अक्टूबर और नवंबर, and I am also there on Twitter. Alpha Niti is also there on Twitter. We keep tweeting a lot of things about the market and the current state. So at that point in time, we were looking at all our portfolios which we manage in Alpha Niti. और उसमें जब हम कंपनीज को स्टडी कर रहे थे तो एक चीज हमारे ध्यान में आई थी और वो ये थी कि एक मिनट, एक स्लाइड में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ पहले. तो ये चीज थी कि हम जब कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो एक चीज हम हमेशा देखते हैं कि उसकी वैल्यूएशन क्या है. राइट, वैल्यूएशन तरह तरह की होती है. एक तो डिविडेंड यील्ड होती है, एक पी रेशियो होता है, बुक वैल्यू होता है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू है, ईवी एबिटा भी होता है. तो हम एक चीज पे मेट्रिक पे हम कंपनीज को देखते थे क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, पेटीएम और जोमेटो जैसे कंपनीज भी लिस्ट हो रही थी. अब जो कंपनीज में अर्निंग्स ही नहीं है, जिस कंपनी में बुक वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उनको कैसे वैल्यू किया जाए. तो हमने ये एक मेट्रिक लगाया था, प्राइस टू सेल्स. प्राइस टू सेल्स मतलब मार्केट कैप टू रेवेन्यूज, टोटल रेवेन्यूज. उस कंपैरिजन पे हमने ये एक एनालिसिस किया था और आपके सामने ये जो टेबल दिख रहा है, इससे आपको एक चीज ध्यान में आ सकती है कि जो मार्च और नवंबर में या पिछले साल 2021 में जो हुआ था, और अपन ये भी कह सकते हैं कि एक किस्म का पागलपन था मार्केट में. बुल्स, ये पूरा बुल मार्केट का फेज था जिसमें लोगों ने वैल्यूएशंस को एक तरफ रख के सिर्फ मोमेंटम को चेस कर रहे थे, स्टोरी पे स्टोरी बना के स्टॉक प्राइसेस को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ खींच रहे थे. और ये आपके सामने नतीजा रहा. इफ यू सी, वी डिड दिस एनालिसिस ऑन टॉप 500 non-banking and non-financial companies in India. Okay, and on the price to sales metric, on an average between 2017, 18, 19 or even 20, the number of companies which was trading at more than 10 times sales, forget earnings, more than 10 times sales, used to be below 20. मार्च 2021 में ये जो बिलो 20 का आंकड़ा था ये 55 हो गया और उसके 5 महीने के अंदर 55 का 88 हो गया. आप समझिए, 88. मार्च 2020 में ये चीज 8 पे थी और फिर वो 88 हो गई 2 साल के अंदर अंदर. इनफैक्ट 1.5 साल में 88 हो गई. राइट, तो ये एक किस्म का हम कह सकते थे अपेरेंट था कि ये एक क्लियर कट केस ऑफ बबल था. और ये बबल अभी अनवाइंड हो रहा है, ये बबल बर्स्ट हो चुका है. बिकॉज आज आप अगर 5 महीने बाद देखो मार्च में, तो ये आंकड़ा पूरा नीचे आ गया है. अभी तो हम सिर्फ मार्च 2021 के लेवल पे आए हैं. हमारे हिसाब से ये जो लेवल है 52 कंपनीज विच आर ट्रेडिंग एट मोर देन 10 टाइम्स सेल्स, और उसके बाद 5 to 10 टाइम्स सेल्स में भी 99 कंपनीज है. ये जो पूरी आंकड़े है ये यहाँ से भी आधे हो जाएंगे क्योंकि ये केस ऑफ जो ओवर वैल्यूएशन है अपने बाजार में, इसको कहीं ना कहीं करेक्ट होना जरूरी है. वैल्यूएशंस को थोड़ा टेम्पर होना जरूरी है ताकि फिर लॉन्ग रन में रिटर्न्स बन सके. तो इस हिसाब से
अगर हम देखें तो क्या हुआ है अभी, एक जो थीम है हमारी कि ठीक है अगर ये कंपनीज जो है वैल्यूएशंस में गिरती है तो ये क्या सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप आपके सामने एक टेबल देखोगे 2010 में 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी सिर्फ 10 या 15 हुआ करती थी। 2010 के पहले तो ये 15 के नीचे थी, 2010 में ये 15 थी। 15 की आज यही चीज 40 to 50 कंपनीज हो चुकी है। और आई एम वेरी श्योर that this theme will continue to play even if the market corrects from here by let's say another 10-15%, 20%, 2 साल, 1-1.5 साल का, 2 साल का बेयर मार्केट भी अगर हो जाए, लॉन्ग टर्म में ओवर द नेक्स्ट 5-10 years ये जो आंकड़ा है ये अगर यहाँ से डबल भी हो गया तो मेरे लिए कोई सरप्राइज की चीज नहीं होगी। ये जो एक ट्रेंड है ये चलता रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा होते जाएगा, वो मार्केट में कंसोलिडेशन होते जाएगा, द बिग विल कीप गेटिंग बिगर। ये एक की टेक अवे है। दूसरी चीज ये रही, अगर हम देखें तो लोग क्या बोलते हैं कि यार मार्च 2020 में जो निफ्टी का बॉटम था वहां से हम इतना ऊपर चले गए हैं। अब क्या होता है, असली दुनिया में कोई ना बॉटम पकड़ सकता है ना कोई टॉप पकड़ सकता है, तो बॉटम और टॉप से रिटर्न मेजर नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि पिछले 2-3 साल में ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर का रिटर्न क्या बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑफ द टॉप 1000 कंपनीज इन इंडिया, and this is equal to almost 90% of the total market capitalization of the country today. 90%. Okay, so I'm covering 90% of the market. Market itself has compounded at an average of 19% over the last 3 years, which is huge. अगर यही आंकड़ा मैं पिछले 7 साल का दूं या पिछले 10 साल का दूं तो ये 19% का आंकड़ा जो है वो एक्चुअली कम है, वो लगभग 12 से 13% है। तो what it also means is that the forward 1 year 2 year returns are likely to be subdued because ये जो 19% का रिटर्न है जैसे हम 5 साल 7 साल कंप्लीट करेंगे ये गिरता जाएगा। अगर ये गिरेगा तो यदि दो चीजें होगी, ये करोड़ का मतलब इसको बोलते हैं लगभग 2.4 ट्रिलियन रुपीस, ये यदि यहीं पे रहेगा, मार्केट यहीं पे सड़ता रहेगा, या फिर यहाँ से और एक करेक्शन आ सकता है ताकि ये जो रिटर्न है आपका ये घट जाए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में 19% का रिटर्न बहुत ज्यादा हो गया है, इतना तो मार्केट देता नहीं है। क्योंकि 10 साल में अगर आप देखो, 15 साल में देखो तो द एवरेज मार्केट रिटर्न फॉर हैज बीन अराउंड 13 to 14%। Okay, the other thing I wanted to talk about is कि market में already there has been so much of correction. Now just look at this table below you, okay? Look at the key indices. All the key indices, whether it's Nifty 50, Nifty 500, Mid Cap Index, or even the Small Cap Index, they are already trading below their 200-day moving average. अब ये 200-day moving average आप लोगों ने काफी सुना होगा, बाजार में बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो it is nothing but the average price over the last 200 trading sessions. 200 trading sessions मतलब over the last 1 year, right? Over the last 1 year जो एवरेज प्राइस है, आज की प्राइस उस एवरेज प्राइस के नीचे चली गई है, तो ऑलरेडी ट्रेंड बदल चुका है। ये रही एक बात। दूसरी बात ये है, लोग कहते हैं कि जब 20% या उससे ज्यादा का करेक्शन हो जाता है तो बेयर मार्केट शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखेंगे, सॉरी Akshay sir, sorry for interruption. Can we move ahead in English, because there are people who are asking for English language as well. So then I'll just continue in English from henceforth. I will not talk in Hindi. Okay. Okay, no problem. So we will switch to English now. My apologies to all the participants. So what I wanted to say over here, if you look at the table below, right? Look at all the key benchmark indices in front of you. They are now all trading below their 200-day moving average. The 200-day moving average has some amount of significance because what the daily moving average does is that it captures the average price of that particular stock or index over the last 200 trading sessions, which is roughly equal to 1 year. Today's price is now trading below the last 1 year's average price.
which basically tells you the trend has now turned. It's changed. You were in a structural bull market for the last 2 years. Everybody made a lot of money. And when that bull market has turned into, maybe it's a bear market now, we don't know yet, but the trend has definitely turned, and it turned gradually, and then it turned sort of all of a sudden. Now, technically, what people say is that when you have a correction of more than 20%, you have entered a bear market. Now, imagine your key indices are still not in a bear market. They have not even corrected 20%. Nifty 50 is down only 15% from the top. Yet, almost 60% of the top 1,000 companies or 630 companies have already corrected more than 25%. More than 25%. The average is actually close to 35%. So 600 companies of the top 1,000 companies in India have already shaved off 1/3 of their valuations already. And the market is down only 15% from the top. So when people say that, Nifty has fallen only so much, or, the Nifty has not really corrected a lot, Nifty is just a smoke screen. The real damage lies underneath. And this is the same story, by the way, which has played out across the globe. It has played out in the US markets. It's played out in Europe. It has played out in all other emerging markets as well, including China. And India is now finally catching up after having outperformed almost all the other global markets over the last 1 year. Now we are sort of catching up with the global markets, right? Now, this is something which is very interesting. So I had recently, I just told you about, the importance of the 200-day moving average. So when we look at statistics in the market, there are two important moving averages that we typically look at. So we look at the 50 days moving average. We look at the 200 days moving average, right? So if let's say a stock is trading above its 50-day moving average and also its 200-day moving average, we say that it is in a bullish territory, the trend is bullish. If the stock is trading below its 50-day moving average and it is also trading below its 200-day moving average, then we say that the stock is in a bear grip, the trend is negative, right? Now, what this tells you, the number of stocks which are still above their 50 days moving average, okay, so they are firmly in the bull territory, is now dropped to around 30%. And by the way, look at this green line and the red line. Look at the significance. Major market bottoms have usually occurred when this blue line that you see in front of you goes below the red line, which is 18%. So what it means is that more than 85% of the top 1,000 companies need to start trading below their 50 days moving average. That means all the stocks have gone down very, very badly. And that is where we believe the market usually finds a durable bottom. And this is the same story, by the way, even in the 200 days moving average. Important market bottoms have usually occurred when this ratio, right, this line, green line that you see in front of you, falls below this red line. Right now, still about 45% of the stocks, okay, are trading above their 200 days moving average, right? This needs to fall further, which means that there is still a lot of pain left in the market. I won't be surprised if we see some kind of a small pullback in the market over the next few weeks or months, and then the correction again resumes. Or then the other thing that can happen is stocks might go sideways, the moving averages gradually trend up, and they catch up with the prices. But it definitely tells you that the days of a runaway bull market are for now temporarily behind us. So it is better to err on the side of caution. Savdhani se, you should invest in the market. Don't go after the hot stories. Wait and watch. See where the valuations are for your companies, and then start investing in them slowly and gradually, not in lump sums. This is something that I had actually tweeted from my personal handle, this slide that you see in front of you, somewhere around 25th of January. So I had done this study to try and mark, where can the Nifty really find a durable bottom before a new phase of the bull market again begins.
And for this, I had gone back and I had looked at all the major instances of the Nifty from 2003 onwards. You know, when the first big bull market happened. I mean, I'm sure all of you remember the big bull market from 2003 to 2007, right? But remember, even then, between 2003 and 2007, on two big occasions, the market corrected almost 30 to 40% every time from its interim top. And imagine if you were in that particular period, you would have thought that the bull market is over, it's all over. And now we have begun a bear market. But no, the markets did show a swift correction and then it continued with the bull market as everything was normal. But if you see this in front of you, what this tells you, and I will explain this to you in a chart. Just give me a second. Let me share that chart with you on the screen. That should make things very, very clear. 1 minute, please. So if you see this chart in front of you, this is the long-term monthly chart of the Nifty 50 index going back from 1990, almost 1991, 92, right? We have all the data over here on this chart. Now these moving averages, this blue moving average and this black moving average, see the beauty. This was a 2008 correction. We took support and bounced from the black line over here. The next bounce again, the flash crash of March 2020. Again, see how beautifully this worked. Now, obviously, this is far away. This is at 9,700. So I am not saying that the market is going to go and break 10,000 right now. No, that is unlikely to happen in my view. But in this particular phase, see how many times it has taken support. So this was a bull market, right? You see this phase from October 2008 all the way to February 2020. For 12 long years, Nifty was in the bull market. It kept making higher tops and higher bottoms, but every bottom coincided with touching this blue line, which is the 60-month moving average. Today, this moving average is at 12,500. Now, assuming, and then again, if I go back to my original presentation, I had made this summary. This is what my observation was, after doing this analysis, that there is a good likelihood that the Nifty might continue to retrace. Now we have already, by the way, at that point in time, Nifty was at 17,800 when I made this tweet. Today we breached 16,000 today. So 23.6% retracement has already happened. 14,400, 13,100, who knows, maybe even we might breach that, even 12,000 might come. I don't know, but it's quite likely that markets might find a durable bottom somewhere between the 13,000 to 14,000 range. But now the main question remains: should I invest over here? Right? I mean, if there is a big correction ahead of me, why should I invest right now? But this is exactly the time when people should step up and invest. So I would actually, adhere to the fact that if you have SIPs running in an uptrending market, if you are investing, let's say, or let's put it this way, if you have 20,000 rupees to put in the market every month, you have committed 20,000 rupees. If you are in a bull market today, right, and the markets are going up very nicely one way, instead of putting 20,000 rupees, put only 10,000, put only 5,000 every month, right? And then comes the bear market, when the returns start becoming negative, right? So 1 year return would be negative, 2 years return would be negative, 3 years return would be negative. That's fine. But it is during this particular time when instead of putting only 5,000, now you should step up and you should put in the balance amount of your commitment. So for example, for 6 months out of 20,000, so 20,000 into 6 is 1,20,000, right? Now in a bull market, you invested only 5,000 each month. So you invested actually only 30,000 out of your contribution of 1,20,000. You have 90,000 rupees of cash left, and that should be put to use during this time when the returns, when back returns are not really great, when the past returns are not really great. That's the best time to invest in the market. This chart in front of you actually tells you that.
if you notice this gray line, this is nothing but a moving 2-year average of how money would have been made in Nifty Bs had you kept putting money in Nifty Bs, right? Nifty Bs is basically like an index fund. So whenever this gray line went about 20%, what this means is if I had put money, or if I look at the Nifty B's return as of today, then it will calculate the returns over the last 2 years. It has given a 20% compounded return, right? But then what happens is returns are cyclical. So see what happens to this gray line, right? From the top in 2015, where it returned 20%, because from 2013 to 2015 the market was going one way up. Then came the bear market from 2015 to February 2016. In fact, the markets really bottomed during demonetization in November 2016. See the back returns. It actually went negative for a period. This, in hindsight, would have been one of the best possible times for somebody to be fully invested. But what investors actually do is they invest over here. They put all of their money to work over here and they withdraw their money over here during a time of demonetization. You should be doing exactly the opposite. So I would say this, the next 1 year, 2 years, maybe you may not really make a lot of money, but this is actually the period where you should be committing a lot more money to the stock market, because 5 years out, 10 years out, this bad period is going to add up to great, fantastic returns over the longer run. This is something which I wanted all my, all my participants to walk away with. This I've already spoken about, right? This is fine. Last but not the least, I would like to talk about the performance of some of our portfolios. So as I showed you in the market demonstration on the platform, I showed you some of our portfolios. And given the kind of analysis we do and the portfolios we build, I am very proud to say that in spite of the horrible 100 days that we have faced in the market since last November or December, we have been able to sort of withstand the market volatility, and you can see the performance in front of you. This is the outperformance versus Nifty 500, not even Nifty 50, because I think Nifty 500 truly represents the kind of portfolios you have built, because our portfolios are multi-cap portfolios. They will have a mixture of large caps, mid caps, as well as small cap companies. Because we believe that a flexi cap approach or a multi-cap approach is the best way to invest in the market and not have any particular market cap bias, like I want to invest only in large cap companies or blue chip companies, or I want to invest only in small cap companies, because there are phases when only blue chips will do well. There are phases when small caps will outperform the Nifty by a huge margin, right? And we don't want to be caught in the up cycle and a down cycle. So the best thing to do is have a flexi cap approach, which is what we have done in our baskets over here. And we try to give you the best of all the worlds. So this is the performance of our products in a nutshell. Now, very quickly, I would like to open the floor for Q&A for the next 10-15 minutes. Anybody, if you are having any queries regarding the current market scenario or any of the slides shown out here, or any of the particular stocks per se, so you can just chip in your questions in the Q&A section. I think Akshay sir, okay, so Perfect. yeah, there is one question that has recently come up, which is the safest sector to invest. So safest sector, okay, I would say this. In fact, we had done a webinar just 2 weeks back, and this was just around the time the Russia-Ukraine, war had just broken out. And metals was something that I had asked people to look at. So metals as a sector,
and even commodities in general. So commodities will include not only hard commodities but also soft commodities. So agro. I think this is a space to invest in. In hindsight, I mean, I actually said this 2 weeks back, and after that, it has worked like a charm. So the key sectors I would look at is metals, energy, and in India, you really can't invest in nickel or wheat or all the other agro commodities. So the best thing you can do is probably look at sugar sector, right? So sugar companies are something that you can look at. In fact, some of our portfolios do hold sugar companies also. Again, I think that's one. Secondly, I think the pharma and the IT space will also find some amount of outperformance in the current market scenario. I would completely avoid consumer consumption sector and the financial sector, because I think there is a lot of over participation over there. It's a very, very crowded trade. And that's actually the space where FIs have the maximum amount of allocation and exposure. And when we see such large exodus of FI money out of Indian markets, they are logically selling what they own, right? And what they own the most are financials, which is basically the HDFC twins, right? And consumer companies. So I think from that perspective, owning financials or consumer companies is something which I'm not in favor of. I would rather focus on something like metals, energy, commodities, manufacturing. Even infra and investment related themes are likely to do very, very well. How can I plan my investment now? So like I said, sir, best thing to do is you should look at some of our alpha matters. Like I said, I believe in a flexi cap approach. I don't have any particular bias only for blue chips or only small caps, because I think each asset category will do well in phases, right? Nothing just keeps going up forever or going down forever. And I think the last 2 years has clearly taught us that. So it is better to have a balanced approach, and you can take a look at some of our alpha matters on the platform. Right. Banking sector, I think, like I said, I've already given my opinion. I don't really think financials and banks will be outperformers from here in the market. I would look at other sectors. So actually, let me do this. I will share my screen and I will show you one chart. I love to use something called as relative strength. Okay. And when I look at relative strength of a stock, I don't mean that RSI oscillator. I mean relative strength of the stock versus the benchmark that it is a part of, right? So we all know about HDFC, right? We all know that HDFC Bank is a part of Nifty, correct? But what do you do, or what can you do with HDFC upon Nifty? So this chart over here, in a nutshell, this is HDFC Bank versus Nifty from 1999 till today. Okay. This line, when it is going up one way, as you can see in front of you on the chart, it basically means that HDFC Bank has been outperforming Nifty so many years, right? 1999 to 2020. That's 21 years worth of outperformance. 21 years is a generation in the market, right? I mean, anybody who would have invested in HDFC Bank at any point in time in these 20 years would have made more money than he would have made money by buying only the Nifty. That was the truth until December 2020. It has now changed because of the simple reason that, again, I look at these moving averages, because the moving averages are very, very powerful indicators of how the trend is shifting in a particular instrument. This indicator, which is the blue indicator, okay, has cut below this black moving average for the first time in 21 years, and the price is also below. Price, matlab the ratio is below the moving averages. It tells you that HDFC Bank since December 2020 has actually started underperforming the Nifty itself by a huge margin. And by the way,
We all know that since February of last year or March of last year, for the last 1 year, FIIs have been selling in India non-stop. What is the one stock which is the most owned by FIIs? It's HDFC Bank. You can see this in the price action in front of you. So one more question has come up in the Q&A section. So what is the potential of mid and small cap in the future? See, again, I'll say this, that mid caps, small caps, large caps, blue chips, they all move in cycles. Okay. If you had put money in mid caps or small caps in 2018, no matter what, 8 out of 10 stocks would have underperformed the market. Why? But at that point in time, between 2018 to 2020, the Nifty actually kept going up. Why? Because large caps were going up, large caps were outperforming the market, right? So I think things move in phases. At this point in time, I would continue to adopt a very stock-specific approach. I would continue to adopt a very flexi-cap approach. So I would try to look for opportunities across all segments, whether it's mid or small or large. 1,000 crore company can become a 10,000 crore company, or 50,000 crore company can become a 10 lakh crore company also. It's just about the time frame. Again, like I said, sir, you can look at some of our baskets, our alpha matters, thematic alpha matters. I think metals, energy, sugar, agro space should do very well. I think manufacturing, infra related or capex related themes should do pretty well from here. I think even something like pharma can do well from here, because pharma has underperformed for a long time now. Over the last 5 or 6 years, pharmaceutical stocks have really underperformed, and I think that's why that's one sector which should be really closely looked at as well. Right. So any other questions from any of the attendees? Okay, so since I think we are good to go. So Akshay ji, are you there? Akshay Agarwal, Mr. Akshay Agarwal. Yeah, I'm here. Yeah. Yeah. Hi, sir. So you can go about. I mean, is it? Can we conclude the meeting, and you can always put in your inputs? Yeah. Okay. Is Mr. Bhatt addressing? No. No, Mr. Bhatt is not addressing as of now. Okay. So maybe in the next webinar that we plan, Mr. Bhatt will be joining the same. So guys, we've all seen the demo of the product. I've seen this. I think this is the third time I'm seeing it, and always find it interesting. It's a good way to actually understand and build a portfolio, do a lot of analytics, back test it, see past returns, look at which sector interests you, do sector-wise analysis. So this platform, I found it to be very interesting. Both for an investor as well as for generally looking at how to increase revenues, how to engage with clients. I think it's a very great platform, and I wish all of you promote this. We've heard my namesake Akshay talking about the market. It was a very good presentation, very crisp. I was hoping it went on a little longer, shorter than what I expected. But whatever slides were there, they were very useful, very informative, and the experience that he has, 15 years experience, that was showing in his slides. We do hope that we'll have more such sessions with the team at Alphanity, and I look forward to a very long association with Alphanity. Thank you so much.
Thank you, Akshay Agarwal ji, for your deep insight and your heartfelt thanks for this entire session. And Akshay sir, Mr. Akshay Bajate? Yes. Yeah. Yes. Yeah, so there has been one request before we, before we log in. So about ONGC, can you throw us some light on it? I cannot give actually really stock specific recommendation over here. I can only talk about sectors. So having said that, I think energy and metals, right, is the space to really focus on. I think, from that perspective, he's looking in the right direction. So thank you, sir, for your input. I hope, dear investor and attendee, I think your overview over the particular stock that you just mentioned has been given some kind of light. With this, we are wrapping this session up, and we would like to thank you, heartfelt thanks for every attendee, to the entire management team, Mr. Akshay Agarwal, and to all the participants out here. It has been an extremely extremely good opportunity for us to communicate with you. In near future, we will be keeping these such webinars. From time to time, and you will be getting the invitations. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Akshay ji. Thank you.